Hello my dear students, I am Anupam Mishra. I welcome you all in the series lecture of class 10 computer application. In today's video, I will teach you how to create HTML table, okay? And I will try to concept the HTML table with a single video. I have taken this output, and for that you have to write an HTML table, okay? Here I will use all the important tags as well as all the important attributes of the table tag. I will try to cover and I will explain step by step process. So without wasting much more time, I am going to begin. I just open my notepad, okay, and start typing the HTML code. So first of all I will use the HTML tag. After using HTML, I will use head tag. Then I will use title tag. In title, I will give the short description of the title. Okay. College timetable. College time table. Clear? Then I will close my title tag. This is the basic part which you have to do while writing the HTML code. I will open my body tag. Now see, as you are watching at the output that the background color of this particular HTML table is pink color, and I have written this text college timetable which is centrally aligned, and I have used the largest heading tag which is nothing but h1 tag. Okay, now I have also used over here font color attribute which is a blue. So I will write this. Okay. So okay. So for that I will just use BZ. BZ color is equal to pink. BZ color is equal to pink. Clear? Then I will use h1 tag, font tag whose color is blue, and it is center aligned. College time table. Okay, then I will just close my font tag, and then I will close h1 tag. Okay, so I will save this file, save. File save is HTML table 10th.htm. I save this text file on my desktop. Okay, so I will show you my desktop. Now see the output means मेरा बैकग्राउंड कलर व्हाइट से ब्लू हो चुका है, सॉरी व्हाइट से पिंक हो चुका है, और यहां पे मैंने कॉलेज टाइम टेबल सेंट्रली अलाइन करके लिख दिया, ठीक है, ब्लू कलर में. आई विल राइट द नेक्स्ट पार्ट. आई विल यूज टेबल टैग and I will apply some attribute over here. For example, border attribute, I will take the value of the border which is nothing but 2, cell spacing attribute, I will provide the value 3, and cell padding attribute, I will take also the value of cell padding which is nothing but 3. Clear? So these attributes you will get to know later on what are the uses of the border attribute, cell spacing attribute, as well as the cell padding attribute. Okay, and I will also take one attribute, align center is equal to center. I will use a tr tag. I am going to write the very first row code. The very first row is the time 8:30 to 9, 9 to 9:30, 9:30 to 10, 10 to 10:30, and see over here one more thing you have to notice, that I have taken here, I have taken this as a blank. Okay,
this area, this portion blank. Okay, so for that I will just write the TD tag but did not write anything. I will align it center only. Clear? So I will just erase it. And see the next coding part. So TR, the coding for the very first row, TD, align center. Then I will use TS, table header, TS tag, and I will write the time 8:30 to 9. I will copy this. Next timing is 9 to 9:30. 9 to 9:30. Next timing is 9:30 to 10. Next timing is 10 to 10:30. Next timing 10:30 to 11. After that, next timing is 11:30, 11 to 11:30. Then next timing is 11:30 to 12. No, not, I think it's 12:30. 11:30 to 12:30. Okay. So next timing is 11:30 to 12:30, 1 hour class. 1 hour class for Monday को computer, 1 hour class computer. Okay. The next timing is 12:30 to 1:30. Okay. After that, I will close the TR tag. Just press the CTRL button plus S to save this. Now I will refresh you to show the output for the very first line. See, so the output for the very first line has been displayed on your browser screen. Now I will write the second row coding part. Okay, HTML code for the second row. For that, I will again use the TR tag. Here, one more thing. Here I have used TS tag, table header tag, because all the time is written in the bold form. Okay. Next, for writing the second row, I will use that TR tag. I will use TD tag, align center, Monday. I will copy this. Social science, second element है. Social science. यहां पे देखिए मैथ्स को मैंने ब्लू कलर में लिखा है. सो आई विल यूज द फॉन्ट टैग एंड आई विल अप्लाई द कलर एट्रीब्यूट ब्लू. Font color blue and subject is math. I will copy the same code and I paste it into the next line. Okay, font color अब black हो गया, subject आपका science हो गया है. फॉन्ट कलर अगेन रेड हुआ है, देन आपका सब्जेक्ट हिंदी हुआ है.
Okay. After that, see at the output. See this output. Here, after Hindi, I just use row span attribute inside the TD tag. Why? Because I just span 6 rows in a single row. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6 row I am going to span into a single row. So I just use row span attribute, okay, in the TD tag. Now see, so TD align center, and here you will use row span in the TD tag. TD row span is equal to 6. TD row span is equal to 6, align center, and here I am writing lunch. So in this format you will write L, then you will use BR tag to break the line. U, then also you will just break the line. L, U, N, just break the line. L, U, N, then C, break the line again. H, okay, H के बाद आपको line break नहीं करना है, because you are not going to write any next letter. That's why there is no need to break the line after writing the letter H. Then hit the enter key. Just I will copy this and paste it over here. Okay, next subject is color maroon हो रहा है and subject आपका English है. Subject English. Next color brown, subject computer. Brown, subject computer. Now see the output. Okay, here for writing the counseling part I do not use any font color, so I will not apply font tag and their attribute color. Okay, keep in mind. Then TD align, I will just erase this font attribute, align center, and subject is counseling class. Counseling class, then I will close the TR tag. After closing this TR tag, my coding part for the second row has been over. I will just save it and refresh the browser screen. See the output. Output बिल्कुल as it is मिल रहा है. See, Monday social science के बाद मैथ है. ओके, कुछ थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है. Monday social science, math, science. Timing 8, 9, 9:30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So I will just edit some mistakes are there. So I will try to resolve these mistakes. देखना 12:30 to 1:30 पे काउंसलिंग क्लास है. ठीक है, यहाँ पे लंच टाइम जो है आपका वो 10:30 to 11 के बीच में है. लंच टाइम 10:30 to 11:30 के बीच में है. सो आई विल जस्ट करेक्ट माई कोडिंग पार्ट. ओके, मंडे टीडी सेंटर सोशल साइंस, फिर यहां पे मैथ है. सोशल साइंस के बाद ये अननेसेसरी लग गया है, गलती से कॉपी हो गया है. सो आई विल जस्ट इरेज दिस पार्ट. अगेन आई विल सेव इट and I will show you our output. See, I will refresh it. Clear? Now social science, math,
साइंस, हिंदी 10:30 to 11 में लंच है, इंग्लिश, कंप्यूटर, काउंसलिंग। आई होप नाउ इट इज क्लियर। एक एक्स्ट्रा मैंने कोडिंग लिख दी थी गलती से कॉपी पेस्ट के चक्कर में, ठीक है, उसको मैंने इरेज कर दिया है। नाउ इट इज क्लियर। ओके, सो after that I will write the next, use a tr tag for the next row, tr, I will copy it, यहाँ पे मैं थोड़ा स्पेस दे दूं ताकि आपको विजिबिलिटी ज़्यादा क्लियर हो। टीडी अलाइन सेंटर, मंडे के बाद नेक्स्ट डे है ट्यूसडे, ट्यूसडे फॉन्ट कलर ब्लू, फिर मैथ ही सब्जेक्ट है, मैथ सब्जेक्ट के बाद फिर आपका सब्जेक्ट है साइंस सब्जेक्ट है, लेकिन इसका कलर रेड हो गया है। आफ्टर देन साइंस सब्जेक्ट के बाद आपका सब्जेक्ट हिंदी है, फॉन्ट कलर लेकिन पर यहां पे आपका ब्लैक है। सब्जेक्ट, दिस सब्जेक्ट इज हिंदी। आफ्टर दैट योर एक्टिविटी पीरियड। ओके, यहां पे फॉन्ट कलर, फॉन्ट एट्रीब्यूट और उसके कलर यूज नहीं करेंगे क्योंकि यहां पे नॉर्मली लिखा हुआ है एक्टिविटी पीरियड, activity period, then I will close। okay, then activity period के बाद आपका इंग्लिश है, ये कलर इसका ब्लैक ही है। इंग्लिश के बाद कंप्यूटर है आपका, और कंप्यूटर इस बार आपका मैरून कलर में लिखा हुआ है। Then last period for the day Monday is library period. Library period. After that I will close the tr tag. Now the coding for the third row, which is Tuesday, is over. Now see the output. I will just refresh it. Now see, clear as it is दिख रहा है आपको output as it is। अब नेक्स्ट चीज ध्यान रखिएगा, यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, कंप्यूटर लैब जो लिख रहा हूं नेक्स्ट ईआर टैग में, यहां पे मैं 3 कॉलम को मर्ज करके एक कॉलम बना रहा हूं, 1 2 3। सो here I am merging 3 column into a single column, so I will use the attribute call span attribute। okay, so I will use call span attribute over here। I will begin next ER tag। मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, डे केवल चेंज करना, वेडनेसडे लिख देना है। वेडनेसडे, वेडनेसडे को भी फर्स्ट पीरियड आपका मैथ ही है और ब्लू कलर में है, सो आई विल जस्ट पेस्ट ओवर हेयर। इस बार साइंस आपका ब्राउन हो रहा है, फॉन्ट कलर इसका कर देंगे ब्राउन। सब्जेक्ट है आपका साइंस, देन फॉन्ट कलर ब्लैक, सब्जेक्ट हिंदी। okay, then font color again
1 सेकेंड, वेडनेसडे का है। अच्छा, सब्जेक्ट हिंदी, मैथ साइंस के बाद सब्जेक्ट हिंदी ना होके सब्जेक्ट आपका सोशल साइंस है, मैथ सोशल साइंस है। सोशल साइंस, ओके। देन नेक्स्ट पीरियड डिजाइन फॉर द एक्टिविटी पीरियड। एक्टिविटी पीरियड, then here I will use the call span attribute. TD call span is equal to 3. Align center, font color black, computer lab. Computer lab. Then I will close the TR tag. I will just save it by pressing the button CTRL plus S. Now I will refresh the output screen and see the changes in the output. See the changes in the output. As it is आपको दिख रहा है कंप्यूटर लैब यहाँ पे 3 कॉलम को स्पैन करके सिंगल कॉलम बनाया। ओके, सो फॉर द नेक्स्ट पार्ट I will use once again TR tag. I will just copy the same thing. कुछ गड़बड़ी होगा तो देख लेते हैं, पेस्ट करेंगे। बार बार लिखने को अवॉइड करने के लिए मैं इसको पेस्ट कर दिया हूं। यहाँ पे थर्सडे लिखता हूं क्योंकि डे थर्सडे है। थर्सडे का फर्स्ट पीरियड आपका मैथ ही है, सेकंड पीरियड साइंस है, थर्ड पीरियड हिंदी है। देन सोशल साइंस, मैथ है, साइंस हिंदी, फिर सोशल साइंस, देन इंग्लिश, मैथ साइंस हिंदी सोशल साइंस इंग्लिश। इंग्लिश के लिए आपका ब्राउन कलर है यहाँ पे, और हिंदी के लिए आपका ब्लू कलर है इस बार आउटपुट में। साइंस के लिए मैरून कलर है। अब इतना आउटपुट देख लेते हैं एक बार, इतना आउटपुट देख लेता हूं। ओके, इंग्लिश अभी मुझे लिखना है। इंग्लिश के बाद कंप्यूटर पीरियड जैसा कि दिख रहा था, इंग्लिश के बाद कंप्यूटर सोशल साइंस। ओके, so after English, here I will not use call span attribute. इसलिए से आपको ऐसा दिख रहा है क्योंकि कॉपी किया हुआ था तो मैंने कॉल स्पैन एट्रीब्यूट हटा दिया। इंग्लिश के बाद है नेक्स्ट पीरियड आपका कंप्यूटर, सिंपल इस लाइन को कॉपी कर रहे हैं इस बार, देन पेस्ट कंप्यूटर, then library period, library. I will just save it and refresh the output. Now see the changes. English, computer, library. Okay, I will write the next TR tag which is for the day Friday,
I will just copy and paste it. Copy and paste it. Here I will write the day Friday. फर्स्ट पीरियड है आपका मैथ ब्लू कलर में, सेकंड मैरून साइंस, फिर ब्लू हिंदी, ब्राउन यहां पे हम यूज करेंगे क्योंकि सोशल साइंस आपका ब्राउन कलर में है, तो फॉन्ट कलर इज इक्वल टू नथिंग बट ब्राउन, सोशल साइंस, देन ब्लैक में इंग्लिश एंड ब्राउन computer, again then library period. You can take any period. Suppose that if I am doing mistake for writing the period, my overall aim is to explain how you will create an HTML table. How in your exam you have to face this type of question, and if you watch this video with full attention, then after watching this single video you can score 15 marks in term 2 examination. Okay, 15 marks in term 2 examination. So watch it very clearly. If I am just changing the subject, it doesn't matter if subject it changes. Okay, आपका concept clear होना चाहिए. Then tr tag, I will just save it and refresh it. Okay, then I will just do it, write it for the day Saturday. Saturday, SATUR. सैटरडे का जो फर्स्ट पीरियड है आपका, वो फर्स्ट पीरियड है मैथ, वो भी रेड कलर में। सेकंड पीरियड है सेमिनार, और सेमिनार के लिए मैं बता दूं आपको कि यहां पे अगेन हमने कॉल स्पैन एट्रीब्यूट यूज किया है। इस जगह को सेमिनार लिखने के लिए अगेन हमने कॉल स्पैन एट्रीब्यूट यूज किया है, एंड आई हैव टेकन 3 कॉलम टू स्पैन इनटू अ सिंगल कॉलम, 1 2 एंड 3। इन तीनों कॉलम को स्पैन करके एक सिंगल कॉलम बनाया है। ओके, आई विल जस्ट टेक द इरेजर। So see, TD यहां पे मैं रफ कर देता हूं, इरेज कर देता हूं। TD अलाइन सेंटर और कॉल स्पैन एट्रीब्यूट भी यूज करना है मुझे। is equal to 3 align center, and this period is for seminar. Clear? Then next period is English period. This next period is for English period. Then next period is for computer period, and font color is brown. Computer, then next period and the last period is library period. Okay, after closing this tr tag, I will close my table tag, then close our body tag, then I will close the last tag, which is the HTML tag. I will save it and refresh the browser screen once again. So see, the output is as it is same as I show you for what you have to write the HTML code. Clear? It may be vary, the period may be vary, the color may be vary, but it doesn't matter। अगर आपका पीरियड चेंज हो चुका है, कंप्यूटर की जगह लाइब्रेरी या लाइब्रेरी का कंप्यूटर आ गया है, it doesn't mean। My main motto is to tell you how you will write an HTML table code for producing the output. Okay, now I will show you some changes I will show you। देखो,
फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल शो यू बॉर्डर एट्रीब्यूट. बॉर्डर, अगर मैंने बॉर्डर की वैल्यू बढ़ा दी, फॉर एग्जांपल मैंने 10 कर दी, तो सी द चेंजेस. थिकनेस जो है बॉर्डर की वो चेंज हो जाएगी. देखो बॉर्डर की थिकनेस मोटी हो गई. अगर मैं 10 से 20 कर देता हूं तो थिकनेस जो है बॉर्डर की वो और मोटी हो जाएगी. आई विल जस्ट सेव इट एंड सी द चेंजेस. थिकनेस और मोटी हो गई. So avoiding this, I will take the value of the border, which is nothing but 2. Okay, see the changes. Now, what are the uses of the attributes cell spacing and cell padding? Clear? So basically, these attributes cell spacing and cell spacing is very important. So basically, cell padding attribute specify the space between the border of a table cell and its content. Okay, and its content, and cell spacing provide the space between, provide the white space between the edges of the adjacent cell. It will provide the white space between the edges of the adjacent cell. Now I will show you. For example, I am just increasing the cell spacing attribute size. For example, 10. See the changes at the output. First of all, I will save it. Then 1 second, cell spacing. Okay, cell spacing, cell C. अच्छा स्पेलिंग गलत था स्पेसिंग का, CING. ओके, नाउ सी द चेंजेस. स्पेस जो एजेस के बीच में था व्हाइट स्पेस वो बढ़ा. एडजेसेंट सेल के बीच में स्पेस बढ़ा. एक सेकंड और मैं वैल्यू और बढ़ा कर देता हूं, ज्यादा क्लियर होगा. 30 ले लिया फॉर एग्जांपल. आई जस्ट सेव इट एंड रिफ्रेश इट. सी ये जो स्पेस है सेल के बीच में, आई विल ट्राई टू क्लियर. ये स्पेस बिटवीन द सेल, ये स्पेस, ये स्पेस, ये स्पेस क्लियर हो रहा है. तो यू कैन कंट्रोल दिस स्पेस विद द हेल्प ऑफ द सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट. I will just erase it. Okay, now I will apply the cell padding attribute. Increase the value of cell padding attribute 30. तो सेव किया, रेफ्रेश करके सेल पैडिंग देख रहा हूं. अब see the changes. Cell padding. Cell padding is specify the space between the border of a table cell and its content. ये टेबल सेल के बॉर्डर और कंटेंट के बीच में जो स्पेस है. Okay, so once again I will increase the value of the cell padding attribute from 30 to 50. Now see the changes. Space बढ़ा. Clear? So I will just take it 3 and 3, 3 and 3. After that you will get your original output. Okay, so this is overall. I hope my concept is clear. Okay, if you like my video, please like it and subscribe my channel and press the bell icon to get the latest update. Thank you for watching. Keep watching, keep sharing.